आपण मानकु ओडिशा स्टूडेंट्स हब यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम पेडागोजी 30 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा जोटा कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड कार्ल रजर्स उपरे अछि। ए क्वेश्चन टी आपको आसुथिबा एसएसबी टीजीटी सिलेबस रे अछि एवं ओस्टेट पई एवं अन्य टीचिंग एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हबो। तबे चलंतु क्वेश्चन को जिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिबा। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? ऑप्शन जी कार्ल रजर, अब्राहम मास्लो, पेट्रार्क, जेम्स एफटी बर्जेंटाल। एथि मधुर किए ह्यूमनिज्म रो फादर? सठिक उत्तर कोन हबो ना? सठिक उत्तर हबो ऑप्शन सी, पेट्रार्क होउछंती ह्यूमनिज्म रो फादर। तेन ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? एथि मधुर कोटा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रे किए एथि मधुर किए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रो प्रोपोनेंट नुहंती? ऑप्शन अछि सिगमंड फ्रॉइड, अब्राहम मास्लो, कार्ल रजर्स, जेम्स एफटी बर्जेंटाल। सठिक उत्तर कोन हबो? राइट आंसर हबो ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रॉइड जाउना। सिगमंड फ्रॉइड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी रे जाउना। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the assumption of the humanistic approach, humans are viewed as option C, passive and reactive agents, active and creative people, driven entirely by unconscious urges, nomothetic, proof, statistics। कौन हम सठिक उत्तर? According to the assumption of the humanistic approach, human are viewed as, human रो view कौन अछि? human मनुष्य मानकर हिसाब रे राइट आंसर हबो ऑप्शन बी, एक्टिव एंड क्रिएटिव पीपुल। तेनु एक्टिव जो कार्यक्षम रे जो कार्यक्षम सह जड़ित एवं गोटे क्रिएटिव पीपुल। तेनु ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर स्टडीइंग द इंडिविजुअल केस रेदर देन एवरेज ग्रुप परफॉर्मेंस? को टर्म टा यूज होई थाए गोटे इंडिविजुअल स्टडी पाई गोटे एवरेज ग्रुप अपेक्षा परफॉर्मेंस ग्रुप अपेक्षा? ऑप्शन सी, नेमोथेटिक, आइडियोग्राफिक, फेनोमेनोलॉजिकल, कॉग्निटिव्स। राइट आंसर हबो कोन? राइट आंसर हबो ऑप्शन डी। राइट आंसर हबो ऑप्शन बी, आइडियोग्राफिक हबो राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लाइफ स्पान इयर्स स्पेसिफिक फॉर द कार्ल रजर्स? कार्ल रजर को केते तार समय तांकर समय काल केते थिला? कार्ल रजर को टाइम जीवन समय ऑप्शन सी 1857 टू 1939, 1902 टू 1987, 1908 टू 1970 और 1912 टू 1990। सठिक उत्तर कोन हबो ना? सठिक उत्तर हबो ऑप्शन बी, 1902 टू 1970 होछि 1987, 1902 टू 1987 होछि कार्ल रजर को जीवन काल। परवर्ती प्रश्न को जिबा। व्हाट इज द कार्ल रजर फेमस फॉर डेवलपिंग और स्टडी? ऑप्शन सी, साइको एनालिसिस, सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, पॉजिटिव रिगार्ड एंड पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, क्लासिकल कंडीशनिंग, हायरार्की ऑफ नीड्स एक्सक्लूसिवली। तेनु हमरो जो कार्ल रजर कोथि कोन दैछंती को स्टडी दैछिले इतिमध्यरु ना कार्ल रजर दैथिले ऑप्शन बी रे जीवो, सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, पॉजिटिव एंड पर्सन सेंटर थेरेपी दैछंती। तेन ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कार्ल रजर, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बिहेवियर? कार्ल रजर को हिसाब रे को प्रकार शिक्षणटा गोटे व्यवहार पई बहुत उपयुक्त बा सिग्निफिकेंटली होई थाए? ऑप्शन सी, रोट लर्निंग, सेल्फ डिस्कवर, सेल्फ अप्रोप्रिएट लर्निंग, टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन, कॉग्निटिव इंस्ट्रक्शन। राइट आंसर हबो कोन? राइट आंसर हबो ऑप्शन बी, सेल्फ डिस्कवर, सेल्फ अप्रोप्रिएट लर्निंग हेबो। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। कंप्लीट्स रजर स्टेटमेंट
लॉजर स्टेटमेंट आसे कोन ऑप्शन अछि देखंतु क्वेश्चन अछि द गॉड लाइफ इज ए प्रोसेस नॉट ए स्टेट ऑफ बीइंग इट इज ए डायरेक्शन नॉट ए डेस्क ऑप्शन अछि डेस्टिनेशन गोल कंक्लूजन पाथ राइट आंसर कोन हबो ना राइट आंसर हबो ऑप्शन ए डेस्टिनेशन हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लॉजर्स 1959 which the three environmental element are needed for a person to grow कार्ल लॉजर को हिसाब रे को तीनोटी प्रकृतिर एलिमेंट्स एनवायरमेंटल एलिमेंट बहुत जरूरी गोटे मनुष्य बा गोटे मानव वृद्धि पाई विकसित पाई ऑप्शन से अच्छी डिसिप्लिन स्ट्रक्चर एंड रूल जेन्युइन एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी इंटेलिजेंस रिवार्ड एंड मोटिवेशन फ्रीडम लॉजिक एंड सेल्फ ग्रोथ राइट आंसर कौन हबो ना राइट आंसर हबो ऑप्शन बी जेन्युइननेस एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी ए सब निहाती गोटे मानव वृद्धि पाई एटा बहुत जरूरी तेन ऑप्शन बी हो सटीक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफाइंड सेल्फ कॉन्सेप्ट अर्थ कौन ऑप्शन अछि द फिजिकल अपीयरेंस एंड ऑफ एन इंडिविजुअल द ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट सेट ऑफ perception and beliefs about oneself, the hidden desire of the subconscious mind, society expectation of a person. Right answer कौन हबो ना right answer हबो option B the organized consistent set of perception and beliefs about oneself then option B right answer. Next question को जिबा which component of the self concept represent the present that you would like to be को कॉन्सेप्टा जाउछि एथि मधुरु को कंपोनेंटा सेल्फ कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट द पर्सन दैट यू वुड लाइक तेनु सेल्फ कॉन्सेप्टा जाउछि जोटा कि गोटे आमे निजर आदर्श भाबे मानि थाउ आउ गोटे पर्सन को ऑप्शन अछि एक्चुअल सेल्फ आउ सेल्फ आइडियल सेल्फ ग्रोथ सो राइट आंसर कोन हबो ना राइट आंसर हबो ऑप्शन सी आइडियल सेल्फ हमर आदर्श हिसाब मानि थाउ आइडियल सेल्फ रे जीवो ऑप्शन सी राइट आंसर. Next question, how many core components of the self concept are explicitly listed? केतोटी component अछि self concept ता ऑप्शन अछि 2 3 4 5 ना राइट आंसर हो ऑप्शन बी तीनोटी कंपोनेंट अछि तीनोटी कंपोनेंट जे छै ऑप्शन बी 3 हेबो राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the defined as the opinion you have about yourself and the value you place on yourself? ऑप्शन अछि सेल्फ इमेज आइडियल सेल्फ ग्रोथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. द ओपिनियन यू हैव अबाउट योरसेल्फ एंड द वैल्यू यू प्लेस ऑन योरसेल्फ यार ए जो को पद को डिफाइन करूची काहा को डिफाइन करूची सेल्फ इमेज आइडियल सेल्फ ग्रोथ ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यार सटीक उत्तर हो ऑप्शन सी सेल्फ ग्रोथ को जीव सेल्फ ग्रोथ को डिफाइन करूची तन ऑप्शन सी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what term describe a state where the self image is different from the ideal self with only a little life left? Option is congruent, incongruent, actualized, balanced. Right answer कौन होगा ना right answer होगा option B incongruent होगा right answer. Next question, under which condition is self actualization difficult? एथि में जो को कंडीशन ता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डिफिकल्ट बहुत कष्टदायक. ऑप्शन अछि व्हेन द पर्सन इज कॉन्ग्रुएंट, व्हेन द सेल्फ इमेज इज सिमिलर टू द आइडियल सेल्फ, व्हेन द पर्सन इज इनकॉन्ग्रुएंट एवं व्हेन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवार्ड इज प्रेजेंट. एवं राइट आंसर कोन हबो ना राइट आंसर हबो ऑप्शन सी व्हेन पर्सन is incongruent have right answer option C right answer. Next question, what is meant by conditional positive regard? एथि कोटा condition positive regard को अर्थ ऑप्शन सी acceptance or love with conditions, total freedom of learners without rules, unbiased and non judgmental respect, empathy without limitation. राइट आंसर कौन होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस और लव विथ कंडीशंस ऑप्शन ए राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एग्जांपल रिप्रेजेंट कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एथि में कोटा रिप्रेजेंट करूथि कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को ऑप्शन अछि आई विल लव यू इफ यू क्रैक आरएसटी लर्निंग इज पर्सन सेंटर द गुड लाइफ इज ए प्रोसेस कॉग्निटिव लर्निंग इज मीनिंगलेस कोटा कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड को रिप्रेजेंट करूथि एथि मधुरु राइट आंसर कोन हो राइट आंसर हो ऑप्शन ए आई लव यू इफ यू क्रैक आरएसटी मु तुमको भलो पाइबी जदि तमे आरएसटी एग्जाम रे क्रैक करिवो आरएसटी एग्जाम क्वालिफाई करिवो देन ऑप्शन ए राइट आंसर एटा कंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड देउछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मींस अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रो अर्थ कोन ऑप्शन अछि वैल्यूइंग समवन ओनली अपॉन मीटिंग रिक्वायरमेंट एक्सेप्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग others as they are without judgment evaluation or condition providing strict behavior direction measuring a person performance against group norms right answer कोन हबो ना राइट आंसर हबो ऑप्शन बी accepting and representing other as they are without judgment evaluation or condition option b right answer next question what two types of learning did Roger introduce in his theory को दुई प्रकार लर्निंग जिसंती कार्ल रॉजर्स तांकर थ्योरी रे ऑप्शन अछि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग कॉग्निटिव एंड एक्सपीरियंस लर्निंग क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इंस्टिंक्ट एंड एक्सटिंक्ट लर्निंग को प्रकार लर्निंग जिसंती राइट आंसर कोन हबो राइट आंसर हबो ऑप्शन बी कॉग्निटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसंती तेनु कार्लोजटा ए दुईटा लर्निंग जिसंती कॉग्निटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग डिफाइंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग रो अर्थ कोन ऑप्शन अछि पैसिव मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एन एक्टिव प्रोसेस इन व्हिच स्टूडेंट लर्न इंफॉर्मेशन थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग ग्रुप परफॉर्मेंस नोमोथेटिक डाटा कलेक्शन राइट आंसर कोन हबो राइट आंसर हबो ऑप्शन बी an active process in which students learn information through discovery and exploration next question how is cognitive learning classified in the given notes under Rogers experiential learning theory cognitive learning टा कोटा भाग करूची को प्रकार नोट्स को कार्ल रॉजर्स जी जो एक्सपीरियंस लर्निंग दिसंती ऑप्शन सी मीनिंगलेस एसेंशियल स्टूडेंट सेंटर आइडियोग्राफिक राइट आंसर कोन हबो ना राइट आंसर हबो ऑप्शन ए मीनिंगलेस डिफाइन होची ऑप्शन ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हाट अल्टरनेटिव नेम और नेम इज पर्सन सेंटर थ्योरी आल्सो नोन पर्सन सेंटर थ्योरी को आउ कोन हिसाब को नाम रे जना जाय ऑप्शन अछि साइकोएनालिटिक थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी क्लाइंट सेंटर थेरेपी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी और फेनोमेनोलॉजिकल थेरेपी रेशनल इमोटिव थेरेपी गेस्टलर थेरेपी को नाम रे जना जाय ना जो पर्सन सेंटर थेरेपी को ऑप्शन बी से जीवो क्लाइंट थेरेपी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी और फेनोमेनोलॉजिकल थेरेपी हिसाब रे जना जाय ऑप्शन बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट रोल डज पर्सन सेंटर थेरेपी रिक्वायर द क्लाइंट टू टेक ऑप्शन सी एन एक्टिव रोल in his or her treatment, a passive role following rigid instruction, an analytical role reviewing group statistics, a purely observation role. Right answer कौन होगा ना right answer होगा option A, an active role in his or her treatment. Option A right answer. Next question. How should the therapist act in person-centered counseling? Option C directive and evaluative, non-directive and supportive, strict and authoritative, detached and neutral. Right answer कौन होगा ना right answer होगा option B, non-directive and supportive होगा right answer. Next question. By providing a therapeutic atmosphere that is real, caring and non-judgmental, what can happen to the person? Also, they can develop to their full potential. They become dependent or clinical directives. They adopt nomothetic behavior. They suppress their subjective and experiences.
राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर हम ऑप्शन ए, दे कैन डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल। ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? तेणु ए टेक्स्ट हिसाब से कौटा को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बुझा होछि। ऑप्शन अछि, व्हेन अ पर्सन अचीव्स देयर गोल विशेस एंड डिजायर इन लाइफ, व्हेन कॉग्निटिव लर्निंग रिप्लेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, व्हेन कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज एनफोर्स्ड, व्हेन ग्रुप नॉर्म्स डिक्टेट इंडिविजुअल एक्शंस। राइट आंसर कौन हम? ना राइट आंसर हम ऑप्शन ए, व्हेन अ पर्सन अचीव्स देयर गोल्स विशेस एंड डिजायर इन लाइफ। एटा होछि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ स्ट्रक्चर व्हेन डू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन occurs? ऑप्शन सी, व्हेन द आइडियल सेल्फ इज congruent with the real self, when the self image differs greatly from the ideal self, when the actual self overrides all emotional desires, when conditions of growth are successfully met। राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर हम ऑप्शन ए, व्हेन द आइडियल सेल्फ congruent with the real self। एटा सेल्फ स्ट्रक्चर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बुझाउछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्पेसिफिक टर्म डिड कार्ल रॉजर्स यूजेस टू डिस्क्राइब द एक्चुअलाइज्ड पर्सन? को टर्मटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बुझाउछी कार्ल रॉजर को हिसाब रे? ऑप्शन सी, द आइडियल इंडिविजुअल, फुली फंक्शन पर्सन, सेल्फ एप्रोप्रिएट लर्नर्स, फेनोमेनोलॉजिकल फैसिलिटेटर। राइट आंसर हम ऑप्शन बी, फुली फंक्शनिंग पर्सन को बुझाउछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ कार्ल रॉजर्स रिगार्डिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड चेंज? ऑप्शन सी, द गुड लाइफ इज ए प्रोसेस नॉट ए स्टेट ऑफ बीइंग, द क्यूरियस पैराडॉक्स इज दैट व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम देन आई कैन चेंज, आई हैव कम टू फील दैट द ओनली लर्निंग व्हिच significantly influence behavior is self-discover, when look at the world I am pessimistic, but when I look at people I am optimistic। राइट आंसर कौन हम? ना राइट आंसर हम ऑप्शन बी, द क्यूरियस पैराडॉक्स इज दैट व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट as I am then I can change। Next question, according to the humanistic principle listed, what rules should teacher fulfill for learners? Option C, a strict text master, a source of motivation and facilitator, a nomethetic evaluator, a cognitive director। तेणु according humanistic principle हिसाब रे एथिमध्यरु कोटा गोटे शिक्षकंकर कार्य होवा उचित। राइट आंसर हम ऑप्शन बी है, गोटे मोटिवेशनल एंड फैसिलिटेटर होवा उचित, मार्गदर्शक एवं गोटे अभिप्रेरित पर्सन हिसाब से काम करिया उचित। तेणु ऑप्शन ए राइट आंसर। आज आम कार्ल रॉजर को 30 इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया, यह निहाती आपण मान बहुत हेल्पफुल हेबो। तेबे आज वीडियो केमिति लागला निहाती कमेंट करिवे और आम चैनल को जदि प्रथम थर पाइछन्ती निहाती सब्सक्राइब करने। तेबे वीडियो शेष कबार गोटे क्वेश्चन पचारि जीवो, क्वेश्चन करबा जार उत्तर आपण कमेंट माध्यम देबे। क्वेश्चन अछि, ऑपरेंट कंडीशनिंग के देथिले बा ऑपरेंट कंडीशन फादर के, ऑपरेंट कंडीशनिंग रो फादर के निहाती कमेंट लिखिबे। धन्यवाद।